As a host, Rocky, you Ashish. can do that? No. Yeah, I can do that. Ye Ashish, बोलिए. We can hear you now. First class या पहले किया? You have done it? First. Nice. Anirudh, for you also first? Yes. Yes, You know what? Let me tell you this. For me also, this is first class. And I am so excited to talk to you both. Honestly, I was looking forward to having more students, but it's good that we'll have a very close-knit conversation and we will get to know each other. So first meeting, मैं क्या करना चाहती हूँ कि let's know each other. I will tell you about myself. You tell me about yourself. And Raki, you also have to participate, okay? You're not going to escape this. So you will also have to tell about yourself. I will share my screen. I have a small presentation which I want to show you. I'll host. After that, you can share your screen. Okay, let me know when I can. Yes, ma'am. Now you can share your screen, ma'am. Perfect. So what I wanted to do, I wanted to welcome everyone. Welcome to our Sai Ram Group C, right? We're doing it every Thursday, 9 a.m. What I want to cover. I am Sarika. I'll talk about myself, who I am. You will know me more. Then we will talk about who is Anirudh, who is Ashish, and who's Rakhi, right? I want to know you all. Who are you? Then tell me one favorite activity about yourself. I'll also tell one favorite activity. Why I'm asking this question? Because going forward, when we meet every Thursday, I want to at least at minimum include one activity favorite for each student, right? This way, everybody will enjoy, everybody will be engaged, and we want to make it fun. Third thing I want you to tell me is, what do you want? Your voice is breaking. Is it still breaking? Hello? Can you hear me now? Yeah, ma'am. Hello? Okay. I think your voice is breaking. Is it still breaking, Rakhi? Should I connect to a different network? Maybe some network issue. Are others also facing the same issue? बाकी को सुनाई दे रहा है? आप सभी को भी ऐसा ही आवाज सुनाई दे रहा है ब्रेक होता हुआ? अनिरुद्ध और आशीष? अनिरुद्ध और आशीष, क्या आपको भी मैम का आवाज ब्रेक हो रहा है? नहीं मैडम, हमारे पास यस मैम। नहीं हो रहा ब्रेक? Sorry, I can't hear you for some reason. Anirudh, you were saying something. Anirudh के डैडी आप कुछ बोल रहे थे? बस क्या? आपको सुनाई दे रहा है ना? Yes, 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 madam. Yes, clear, clear, clear. Okay. Perfect. आशीष, आपको भी सुनाई दे रहा है? Yes. Okay, awesome, awesome. चलो ठीक है. तो राखी मुझे बताना बाद में अगर बीच में ठीक आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है? So हाँ, what I want to do is after favorite activity, we will also talk about what do you want out of this class. And here's the reason. First class, we are doing it in order to understand what is the objective. Why do we want to meet? What do you want from this, right? Some people might say, I just want to have a conversation. I want to make friends. I want to learn English. I want to learn math. There could be anything, right? So let's talk about that what do you want out of this class? So sabse pehle, I'm going to start. My name is Sarika. I have a 10-year-old daughter. Actually, her birthday is coming up this Friday and she's expecting a lot of gifts from me, which I don't think is going to happen. So she's going to be very, very disappointed. I work at ServiceNow. ServiceNow US में एक company है. What it does is it creates workflows. You know what workflows means? I didn't know it either when I joined the company. So I'm going to all help you and explain the basic thing that we do. हम क्या करते हैं?
आपको कंप्यूटर चाहिए, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, and now your computer is not working. What do? You call computer company, your computer is not working. Then what do they do in the company? They open a ticket. Ticket open करते हैं कि computer काम नहीं कर रहा है, and then we send somebody to make it work. So our company builds that software, the application that allows them. So that's basically what my company does. I'm from Jammu. Has anybody been to Jammu before? Jammu and Kashmir? किसी ने नाम सुना है? Yes? No? Yes, ma'am. Yes? Nice. You know, Jammu is a very small place in India, and I'm from there. I'm from Jammu. Okay. Yes, ma'am. What are some of my qualities? I'll talk about that. My daughter says I'm kind. I don't know about that, but I'm a good listener, that I'm sure about, and I love talking. I love talking to my friends. I love talking to my daughter. I love talking to my parents. I just love talking. So what we will do is we will see what activity you all like. Okay, and you know, third question, you remember, I wanted to talk about what do you want out of this class. If you ask me the same question, what I want out of this class is I want all students to understand English, number one, and I want all students to be independent, right? Independent in terms of their ask, what do they need, and also, if possible, if you want to work, I want to help you get a job. That should be our end goal if you're interested, right? इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि what do you want out of this class, so that based on each student I can tailor it. Tailor made मतलब पता है ना, जब आप टेलर के पास जाते हो वो आपके साइज के कपड़े बनाते हैं. That's how I want to make this class for you, just to fit your needs. Okay? Cool. उसके बाद अभी हम introductions कर लेंगे, सब मुझे अपने बारे में बताओ, and then we will do a story time. I will read a story and then we can talk about the story, what you like versus what you don't like. But सबसे पहले इस बार हम क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं. तो कौन next जाना चाहता है? बोलो. Raise your hand who wants to go next. हाँ, कोई भी नहीं. अच्छा, मैं pick कर लूं फिर. I think that's a good idea. I should pick. Alphabetically जाते हैं, ठीक है? We have Ashish, we have Anirudh, and we have Saibal. So what do you think? Alphabetically सबसे पहले कौन आएगा? Anirudh आएगा या आशीष आएगा? जो चौधरी आएगा मैम. अनिरुद्ध आएगा. Good. Yes, ma'am. अनिरुद्ध, बताओ फिर अपने बारे में. आप पहले अपने बारे में बताओ, फिर आप मुझे बताओ कि हम सबको बताओ कि what is your favorite activity, and then what do you want out of this class. और मैं notes लूंगी. No. चौधरी, मेरा नाम चौधरी है. 20 years old हूँ. मुझे कपिल शर्मा पसंद है. कपिल शर्मा बहुत पसंद है. डोरेमोन पसंद है. Oh wow. और क्रिकेट खेलता हूँ. Cricket खेलते हो? Yes, ma'am. Wow. You know, my husband, every morning he's watching cricket these days. वो IPL चल रहा है ना? Are you watching that? Yes, ma'am. Oh nice. चलो, कुछ कॉमन है हमारे बारे में. देखो, क्रिकेट है. और बताइए. कैरम बोर्ड. Nice. Yes, ma'am. Yes. Good. कैरम बोर्ड. ओके. अब आप बताओ, आप इस क्लास से क्या चाहते हो? What do you want to learn? What do you want to do? क्या पसंद है आपको? इस क्लास में क्या करना चाहते हो? इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. इंग्लिश. परफेक्ट. आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश ऑलरेडी बोलते हो.
आप मुझे बोलते हो यस मैम, आपको कैसे पता है? इंग्लिश कैसे आती है आपको? ऑलरेडी आती है? इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव, इंग्लिश में इम्प्रूव, ओके ठीक है, आई थिंक बहुत लॉजिकल है. वी विल डू दैट, वी विल मेक इट हैपन. ओके, गुड जॉब अनिरुद्ध, गुड जॉब एवरीबडी, क्लैप फॉर अनिरुद्ध. यू नो फर्स्ट बोलना इज नॉट इजी. ओके, सो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी आशीष. आशीष, अपने बारे में कुछ बताइए. आशीष अनम्यूट करिए खुद को पहले. My name is Ashish Singh. I am from Ravata. I swim in Moringa. My favorite dream वेरी is गुड, बोलो बोलो. painting. Wow, you like painting, nice. What else? I love painting, watching TV, and learning IT. Oh, learning, watching TV and TV and learning I IT. IT. What is that? What is IT. learning ID? क्या होता है? What is learning ID? He said IT. IT क्या है? Information technology. No. Information technology, ma'am. He is doing data entry course. Wow, आप डेटा एंट्री कर रहे हो? अरे यार, कंप्यूटर में तो मैं एक्सपर्ट हूँ. फिर तो मुझे पता चल गया आप क्या सीखना चाहते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो यू व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस क्लास? अनम्यूट करिए बेटा. Do you want to learn computer? Some more tips and tricks? I've been doing it for the past, 20 plus years now. वो इंग्लिश तो आपकी ऑलरेडी ऑसम है, जस्ट लाइक अनिरुद्ध. ठीक है, आशीष अनम्यूट करके बोलिए. कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं. बोलिए बोलिए. आई थिंक आशीष को वही चाहिए. आशीष को कंप्यूटर्स पे और सीखना है ना. आपको एक्सेल वगैरह आती है? आपसे मैं आई थिंक वी शुड फाइंड अ वे टू टॉक वन ऑन वन एज वेल, राखी, क्योंकि ना Yes, ma'am. सबका अलग अलग इंटरेस्ट है. एंड Ma'am, a lot of they all are doing data entry course. Anirudh, Ashish and Saibul also. ओके, सारे डेटा एंट्री कोर्स कर रहे हैं. तो एक कॉमन है कि कंप्यूटर पे अगर मैं इनको कुछ ऐसा सिखा दूं जिससे वो आगे जाके जॉब लेना उनके लिए और आसान हो जाए. Yes, क्योंकि ma'am. एंड गोल हमारा यही है. यस मैम, आप उसको अपने कोर्स के साथ, इंग्लिश के साथ मिक्स करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. परफेक्ट. एंड इंग्लिश के लिए भी ना व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू इज, हम लोग गेम खेला करेंगे, ताकि हम गेम खेलते खेलते सीखेंगे. हमें पढ़ाई को पढ़ाई नहीं बनाना. यस मैम. ओके, आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं? परफेक्ट. तो चलो, मुझे अनिरुद्ध और आशीष का पता चल गया. अब साइबल, आपकी टर्न है. आर यू एक्साइटेड? आप म्यूट पे हो. My name is Saibal. ओके, अच्छा, आपने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था ना? Yes, ma'am. हाँ, तो लेट मी टेल यू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम लोग क्या बता रहे हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए. दैट मींस टेल अबाउट योरसेल्फ. टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. My name is Saibal. गुड. मैंने नाम नोट कर दिया. और बताइए अपने बारे में. व्हाट डू यू लाइक डूइंग? I live in Baisar Sector 4. You live in Sector 4? Baisar Sector 4. Baisar Sector 4. Baisar? हाँ, Baisar Sector 4. Okay.
ओके मुझे शायद जगह समझ नहीं आई, बट सेक्टर 4 जरूर समझ आ गया। आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? वैशाली सेक्टर 4 वैशाली वैशाली मैम, ही सेड वैशाली। वैशाली ओ वैशाली सेक्टर 4, ये कहाँ पे है? दिल्ली, इन दिल्ली मैम। Oh, so गाजियाबाद everybody is in स्टेट Ghaziabad स्टेट। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट estate. Okay, everybody is in Ghaziabad or everybody is in different No, no, places? no, ma'am. Other, there are some different places. Okay, okay, good. चलो इतना पता चल गया, आप वैशाली सेक्टर 4 में हो, आप गाजियाबाद एस्टेट में हो, आपका नाम साइबल है। What do you like doing? What do you enjoy? What is your favorite activity? गाना सुनना। Oh, nice. You know what? मैं सिंगर थी एक टाइम पे अपने कॉलेज में, तो एक दिन हम गाना भी गाएंगे। How about that? ठीक है, लेट्स डू दैट। मैंने ये भी नोट कर लिया है, एक दिन हम पेंटिंग करेंगे, एक दिन हम सिंगिंग करेंगे, एक दिन इंग्लिश तो करेंगे ही करेंगे, राइट? परफेक्ट। और मुझे एक और बात बताइए साइबल, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस क्लास? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? व्हाट डू यू वांट टू लर्न? कंप्यूटर में काम करते हैं। इमेज वर्ड, इमेज एक्सेल, इमेज पावरपॉइंट। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताओ फिर, it is going to be a very tough question for you. The one I'm sharing, what is it? Difficult है? यस मैम, यस मैम। ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है? एजेंडा। दिस एजेंडा है। ओ अच्छा, क्योंकि आपको वो नहीं दिख रहा होगा। अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे, इस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? आपने बोला ना आप पावर पॉइंट पे काम करते हो, आप एक्सेल पे काम करते हो, राइट? तो ये क्या है? स्लाइड्स हैं। गुड जॉब, ये है एमएस पावर पॉइंट। गुड। तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं। एक दिन मैं आपको सिखाऊंगी कि पावर पॉइंट में क्या क्या चीजें जरूरी हैं एंड हाउ डू वी पुट इट टुगेदर। तो अगर नेक्स्ट टाइम, राइट, आप लोग अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आई विल हेल्प यू मेक योर रेज्यूमे। हाउ अबाउट दैट? एक हम अच्छा सा सॉलिड रेज्यूमे बनाएंगे और आप पावर पॉइंट में उनको दिखाओगे कि व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन डू, राइट? गुड आइडिया? हाँ, क्योंकि मैंने बहुत रेज्यूमे बनाए हैं अपने, मैंने इतनी बार जॉब चेंज करी है, इतनी बार रेज्यूमे बनाए हैं, इतनी बार फेल हुई हूँ, इतनी बार पास भी हुई हूँ, राइट? सो वी विल लर्न टुगेदर एंड फेल होते 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 मैंने अब इतना लर्न कर लिया है कि मैं अपनी सिस्टर को भी ना, आई गिव अ गाइडेंस। शी इज 4 years older to me, शी इज इन यूएस। मैं उसको गाइडेंस देती हूँ, यू नो व्हाट, अपने रेज्यूमे में ना ये निकाल दो, ये डाल दो, एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग जॉब ऑफर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो मैंने इतनी गलतियां की है कि अब मुझे आ गया है, आई कैन टीच यू। So good. I'm glad कि हमने ये conversation की कि what everybody wants out of this class. I'll have a good foolproof plan. तो मैंने अपने बारे में बता दिया, आप सबने अपने बारे में बता दिया। Should we do a story time, English story time, just for next 30 minutes? कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछो। एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है। It is about 27 pages. Not necessarily we will be able to go through all. We might keep it to 10 or 15 because I don't want to overwhelm everybody. Overwhelm का मतलब पता है आपको? Overwhelm का मतलब करना चाहता हूँ। बोलो बोलो मैं इंग्लिश से बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं इंग्लिश से बात करना चाहता हूँ। Please say something in English. इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ओके, इंग्लिश सीखना चाहते हो? ओके, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने लिखा है कि हम क्या क्या सीखेंगे इसमें। वी विल लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, राइट? मुझे ना ये मूवी याद आ गई अमिताभ बच्चन की, वैसे टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या था, पर एनीवेज वी लर्न इंग्लिश। वी विल लर्न डेटा एंट्री ट्रिक्स और टेक्निक्स। we'll do painting, we'll do singing, and we'll also do resume writing. How about that? ठीक है? और इस सब में our focus is going to be English because
90% of the time I'm going to talk to you in English so that at least you can easily absorb English, right? And if there are some words which are difficult, there's a possibility I might use some difficult words. We will talk about that, what that means. Abhi maine thodi der pehle overwhelm use kiya tha. You know what overwhelm means? Maine kaha tha, oh, I don't want to go through too much today. We'll take it easy. Overwhelm ho jayenge. Overwhelm ke liye कि बहुत सारी चीजें हो गई हमारे ऊपर आ गई है सीखने के लिए, समझने के लिए, तो दिमाग को हर चीज को अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए हम धीरे धीरे स्लोली जाएंगे. दैट्स व्हाट आई मेंट बाय आई डोंट वांट टू ओवरवेलम. सो शुड वी डू अ स्टोरी टाइम सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? और मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आप लोगों से इंग्लिश में अबाउट द स्टोरी और नो? Yes, ma'am, you can ask. Okay. I have another way, which is rather than asking questions, I can translate the story. I can do that also. Wherever there are difficult words, I'll tell you what that means. Simple English agar nahi hoga to. Okay, I am still sharing my screen and I have a nice story here, which is called Hide and Seek. ठीक है? तो मैं सुन Hide and seek. हाँ, Hide and Seek. I love that game. मुझे अभी भी पसंद है. मैं जब छोटी थी मुझे तभी भी पसंद था. I think मुझे हमेशा पसंद आएगा. Everybody knows Hide and Seek? सबने खेला है? छुपन छुपाई. छुपन छुपाई. Good job. See, अगर आपको yes और no बोलना है ना, मुझे, और अगर आप फिर भी म्यूट पे हो, yes क्या है? ये. No क्या है? ये. ठीक है? और ये क्या है? ठीक है. All good. ठीक है? All right, let's start the story. Chupan Chupai. James, his sister Sally, and Mark, their BFF, which means best friend forever, were bored. How many people were there? I don't know how many kids are playing in this story. Any idea, guys? James, his sister Sally, and Mark. What are the three names here? Yes, good. You got it. 3. And I said, what are the 3 names here? Oops, I gave the hint already. Okay, so James, his sister Sally, and Mark, their BFF, that means best friend forever, were bored. You know bored क्या होता है? Bored होता है when you're feeling, what do I do next? I don't have anything to do. I feel that all the time. I don't know why. I have to keep myself occupied. Do you have the same problem that, Mummy, मुझे बोर हो रहा है. Papa, मुझे बोर हो रहा है. बोलते हो नहीं बोलते हो? Yes or no? रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप, जैसे मैम आपको बता रही है. यस के लिए आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, थंब अप करना है, और नो के लिए थंब डाउन करना है. जैसे ही आपको कोई सेंटेंस समझना आए या आपको मैम से कुछ पूछना हो, तो आप इस तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं ताकि मैम आपको एक्सप्लेन करें. ठीक है, मुझे लगता है अभी तक सबको समझ आ गया है ना राखी? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ठीक Yes, है. ma'am. Let's move. तो अब they were bored, right? These 3 friends are bored. They had played all day, but now that it was dark and difficult to see, they had nothing to do. So their challenge is, challenge पता है ना? उनकी मुश्किल ये है कि all day they have played, but now they don't know what to do. Well, why do you think that could be the reason? Because it was getting dark. Dark पता है ना, जब अंधेरा होता है तो हमारी options कितनी limited हो जाती है बाहर खेलने को. So they are facing the same challenge. Let's see what they do about it. Okay, they couldn't play soccer because they couldn't see the ball. Who plays soccer in the night when there is no light, right? They didn't want to go inside and play a game because it was a beautiful springtime night and they liked being outside, especially after having to play inside all winter long. तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनको अंदर भी नहीं जाना था. और इनको अंदर पता है क्यों नहीं जाना था? कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं जाना उन्हें अंदर? I want to play. You want to play? They want to play. They want to play. Why do they don't want to go inside? पता है? They don't want to go inside because winter में क्या होता है? When it's cold outside,
You don't get to play inside. I mean, you don't get to play outside. You are inside the house and playing. So now they are saying it's springtime. Springtime पता है क्या होता है? जब फूल खिलते हैं, ठंडी के बाद जो नेक्स्ट टाइम आता है, क्या कहते हैं उसको? स्प्रिंग सीजन, एग्जैक्टली. सो स्प्रिंग सीजन हो गया है, तो फूल खिलते हैं, वेदर भी अच्छा हो जाता है, थोड़ा वार्म होना शुरू हो जाता है, राइट? तो इसीलिए कह रहे हैं दे डोंट वांट टू गो इनसाइड बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग इनसाइड द हाउस ऑल थ्रू आउट द विंटर. So now they want to go outside and play, but it is dark, they can't play soccer. Now let's see. They just didn't know what to do, and it was a little too early for them to go home. पूरे दिन खेलने के बाद भी they are complaining that it's early to go home. Wow, sounds like my daughter here. I guess I'll just go home, Mark said in a sad voice. Oh, come on, replied James. ये लोग आपस में बात कर रहे हैं. एक कह रहा है कि ना मैं तो जा रहा हूँ घर, तो लेकिन वो सैड हो गया. But the other one is saying, James is saying, come on, don't worry about it. Let's figure out something. तो क्या बोल रहे हैं? We still have some time for another game of something. अभी क्या चल रहा है? Page 1 में यही चल रहा है कि they are still trying to figure out what do they want to do, what do they want to play. You understand that? Yes? So far with me? Thumbs up means yes, with me, all good. Down means no, I don't understand what's going on. Up or down? बताइए, करिए, साइन करेंगे आप, तभी मैम को पता चलेगा. हमारे लिए बहुत इजी है कम्युनिकेट करना. अगर आप म्यूट पे हो तो you know this is the best way to do it. Like, you know what? Sometimes I'm in. Yes, oh, very awesome. good, Ashish. Good job. Good. See, when I'm in meetings, right, there are about 50 plus people on the screen on Zoom because we are not going to work. So everybody is on Zoom. And then somebody will ask, are you all good? We all can see the pictures on here. Thumbs up. Yes, we are all good. So you know what you're learning? You're learning one of the corporate tricks today. कि ऑफिस में हम कैसे काम करते हैं, है ना? हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं. जरूरी नहीं है हर किसी को अनम्यूट करके बोलना ही है. हाँ मुझे अच्छा लगा, हाँ I'm good. There are other ways to communicate, and being on Zoom, this is one of them. चलो, next one. क्या बोलता है? We still have time for another game of something. Then Sally said, I have an idea. Let's play छुपन छुपाई, hide and seek. तो अब Sally को idea आया. Let's see how that goes. This is only page 1 and there are about 23-24 more pages. तो interesting होगा कि क्या होने क्या वाला है. And you know what? मैंने सिर्फ इसके 2-3 pages पढ़े हैं. I haven't read the whole story, and here's the reason why. क्योंकि मुझे फिर होता, I should just tell you the story कि what is happening. But Abhi, we are going slow and steady, understanding the story, what's going on. If there are any new words, we'll talk about that. If there's something that you don't understand, we'll talk about it. We are going slow. We are going to make slow progress, but we're going to make good progress. Okay, now what's happening? I was just going to say that James said, yeah, I'll bet, replied his sister. So, brother and sisters, mein, this is so common. Jhagda, ladai. James keh raha hai, I was just about to say that. Yeah, I also had that idea. That's what James means. And sister is like, ironically, उसको एक तरह से taunt कर रही है, right? कि yeah, मैं जानती हूँ. I know, you knew it. Okay. You always say you were thinking of whatever I think of, she snapped. You know what that means? Snapped? Snap का मतलब होता है कि बात काट देना या गुस्से में ऐसे बोल देना. Snapping करना किसी के लिए. Do not, James said in a loud voice. Do too, yelled Sally. तो अब क्या हो रहा है? Brother and sister में looks like there is a small fight going on. One is saying, you always say whatever I say. Other is saying, no, and he's very loud. Do you think being loud is good? Good? Being loud is good or not good? No. No, being loud is not good. Yeah. No. Yes, being loud is not good. You know, whenever we work in the company also, we communicate to our managers, to our peers. Peers पता है क्या होता है? Peers होते हैं जो same level पे आपके साथ काम करते हैं. Managers होता है जो आपके above होता है. तो आप जिसके साथ भी काम करते हो, you cannot be loud. You should not be loud. I mean, you can be, but that's not the right way to work. ठीक है? तो ये भी एक तरह का work ethic होता है कि आप
प्यार से, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट पता ना, इज्जत से, रिस्पेक्टफुली टेल द अदर पर्सन व्हाट यू आर थिंकिंग, बट यू डू टेल। अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। बी ऑनेस्ट, पीपल लाइक ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, तो अपने बारे में आप बता सकते हो। बी ऑनेस्ट, बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। देयर इज nothing in the world that people can stop you from saying if you are saying that respectfully and you're telling your feelings. तो इसलिए जब आप काम करना शुरू करोगे, बिल्कुल हिचकिचाना मत। प्यार से बोलना आपको क्या चाहिए, प्यार से बोलना आपको क्या अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि रिस्पेक्ट बोथ वेज होती है। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू रिस्पेक्ट एज वेल। तो ये चीज का ख्याल रखना। चलो, तो ये लाउड वॉइस में बोला, भैया मुझे तो अच्छी बात नहीं लगी, बट लेट्स सी हाउ द स्टोरी गोज। Mark just looked down at the ground and shook his head from side to side. They are at it again, he mumbled to himself. अब वो क्या, उनका दूसरा जो फ्रेंड है उनके साथ, वो 3 लोग हैं राइट, तो थर्ड बंदा है जो फ्रेंड है उसका, मार्क उसका नाम है, वो बोल रहा है they've started it again. And he said mumble to himself. आपने कभी किया mumble? You know what that means? जब हम धीरे धीरे ऐसे बात करते हैं कि सामने वाले को सुनाई ना दे, उसको क्या कहते हैं? मम्बलिंग। ठीक है, कभी कभी अनिरुद्ध भी ऐसे ही करता है ना अनिरुद्ध? और हम अनिरुद्ध को कहते हैं अनिरुद्ध लाउड बोलिए। हाँ, अभी वो हमें बोलेगा, अभी तो बोल रहे थे लाउड मत बोलिए, अब बोल रहे हो लाउड बोलिए। अनिरुद्ध बोलेगा मुझे कंफ्यूज कर दिया, एक ही क्लास में इतना ज्यादा मुझे बता दिया। बट यस, आई थिंक कभी कभी अनिरुद्ध भी बोलता है, फिर हमें समझ नहीं आता, नहीं क्या बोल रहे हो, बट क्या, उसी को मम्बल कहते हैं। ऑल राइट, then he yelled, okay, let's play hide and seek, I'll be the seeker. Okay, ये खेल रहे हैं hide and seek. अब आपको पता है hide and seek उसका मतलब है छुपन छुपाई, बट hide and seek में 2 रोल हैं राइट, एक बंदा छुपेगा, दूसरा बंदा ढूंढेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, ढूंढने वाले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइड कहते हैं या सीक कहते हैं? कहते हैं सीक कहते सीख। हैं। गुड जॉब यार। आशीष एंड साइबर, आपको भी आंसर्स देने चाहिए यार, अनिरुद्ध तो सारे आंसर्स दे रहा है। हाँ, आपको स्टोरी ये समझ आ लुका रही है? छुपी खेलना, लुका छुपी खेलना। लुका छुपी, करेक्ट। नहीं, लुका छुपी में से अगर मैं बोलूं हाइड एंड सीक, अलग अलग वर्ड है, सेम मतलब है लुका छुपी राइट। तो कौन लुक कर रहा है और कौन छुप रहा है? हाइड क्या मतलब है और सीक क्या मतलब पता है? कौन ढूंढने वाला है? सीक ढूंढेगा या हाइड वाला ढूंढेगा? सीख सीक, हाँ, सीक का मतलब है that they have to find the other person. हाइड का मतलब है you have to hide somewhere. Okay, now he turned, faced a big tree, closed his eyes and started counting out loud. क्योंकि he is the seeker. Remember हम लोग क्या करते थे, जो भी सीकर होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है, काउंट करता है 100, 99, 98, उल्टी काउंटिंग। उसको क्या कहते हैं? रिवर्स काउंटिंग। उल्टी काउंटिंग को क्या बोलते हैं? बैक रिवर्स, काउंटिंग। बैक काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग। गुड जॉब, वेरी गुड। तो वो क्या कर रहा है? अच्छा, काउंटिंग आउट लाउड कर रहा है। 100, 99, 98, 97. Sally and Mark stopped arguing, looked at each other and ran off in different directions to find a hiding place. Chalo, finally they have started playing, because earlier what were they doing? They were just fighting non-stop. Now, in the distance, they could still hear Mark counting 4, 3, 2, 1. What does that mean? If they've come from 100 to 4, 3, 2, 1, doesn't that mean that he's about to close his counting and then he'll start looking for them? Do you think that's going to happen? I think so. See, push that. Ready or not, here I come. Then he turned and began looking for places where they could be hiding. क्या कर रहा है? पहले तो बताओ कौन सीख कर रहा है इस स्टोरी में? किसको पता है कौन सीख कर रहा है? आप लोग टाइप कर सकते हो? आता है ना टाइपिंग आपको? लेट्स यूज योर टाइपिंग स्किल। वहां पे एक चैट बटन है, चैट करके जो मुझे सबसे पहले बताएगा वो आज का क्लास का विनर। मैं वेट कर रही हूँ, कौन चैट करके मुझे बताएगा?
क्योंकि हमें रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल भी तो डेवलप करनी है इंग्लिश की। Oh my God, Anirudh, you got it. But नहीं, कौन कौन सीख कर रहा था, याद आया? सोचो, दोबारा सोचो, लड़ाई कौन कर रहा था? लड़ाई ब्रदर एंड सिस्टर कर रहा था, करेक्ट? तो कौन था जो ढूंढ रहा था उन लोगों को? क्योंकि जेम्स ने कहा और सैली ने कहा वो छुपने जा रहे हैं, राइट? तो थर्ड नेम क्या था जिसने कहा कि मैं सीकर हूं? The answer is Mark. मार्क ने कहा कि मैं जा रहा हूं छुपने। Actually, you know what? इन्होंने गड़बड़ करी है स्टोरी में। They have made a mistake. कोई मुझे मिस्टेक बताएगा? यहाँ पे उन्होंने बोला कि मार्क इज द सीकर, और यहाँ पे इन्होंने कहीं पे जेम्स बता दिया था उसको शायद। नहीं, मार्क इज द ओनली सीकर, यस। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया यार अनिरुद्ध आपने। आप तो छा गए, आप कंफ्यूज कर सकते हो। यस, आंसर इज मार्क। मैंने कहा यार मैंने ही बुक गलत पढ़ी है या उसने बुक गलत पढ़ी है। चलो, वी आर गुड, वी ऑल अग्री मार्क, या मैं अभी भी गलत पढ़ रही हूँ? No, Mark is the answer, right? Mark ने क्या कहा था? He looked at them, he knows that नहीं, you know what? Mark is the answer, but इन्होंने फिर भी गड़बड़ करी है। इनको यहाँ जेम्स लिखना था। This is where they had to write James. You agree? वो क्या कह रहा है? Sally and Mark stopped arguing. No, it was Sally and James. They stopped arguing. Correct? कौन लड़ाई कर रहा था? ये देखो, जेम्स एंड सैली आर्ग्यू कर रहे थे। सीरियल मार्क। उन्होंने गड़बड़ करी है। मैं कंफ्यूज नहीं हुई थी। ये देखो, यहाँ पे कौन बात कर रहा है? जेम्स एंड सैली लड़ाई कर रहे हैं। आगे जाके कहते हैं कि सैली एंड मार्क स्टॉप आर्ग्यूइंग। तो ये मार्क नहीं होना चाहिए था, ये जेम्स होना चाहिए था। बट ये छुपा कौन है? मार्क ही छुपा है। दैट आंसर इज करेक्ट। इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। देयर इज अ टाइपो। यू नो व्हाट टाइपो मीन्स? टाइपो एरर। जब टाइपिंग करने में कोई एरर हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है किसी से, उसको कहते हैं टाइपो। ओके, चलो अब स्टोरी में देखते हैं। जेम्स एंड सैली हाइड कर रहे हैं, मार्क सीख कर रहा है, मतलब वो उनको ढूंढ रहा है। तो आगे क्या होता है? चलो लेट्स सी। In the distance, they could still hear Mark counting 4, 3, 2, 1, ready or not, here I come. Then he turned and began looking for places where they could be hiding. तो अब ये है जेम्स एंड सैली, ये है हमारा मार्क who is looking for them. Let's see what happens. Finding Sally was easy. She always ran off and then circled back so she would be close to base. You know what base is? जहां से शुरू किया था। तो ये कह रहा है, अरे finding Sally is very easy. She will run off, go in circle, and then she'll come back to the base. Looks like that's what's going to happen. Now the safe place to get to before being tagged. You know what? Why she's doing that? Because if you come back to the base from where you started without getting caught, that means you've won. So that's the reason she's doing that. She's going in circles so that nobody can look for her, and then she's going to come at the base. Mark looked for the biggest tree and ran towards it, but she wasn't there. I'll bet she's behind that big bush, he said to himself. Looks like he's mumbling here also. अपने आप से ही बातें करे जा रहा है. So he ran to it and was ready to tag her, but she wasn't there either. आपको याद है hide and seek में होता क्या है? When you find somebody, what do? You tag them. Tag you're it. That means I found you. पकड़ लिया.
So that's what is happening. They're saying, I'll bet she's behind that bush, he said to himself. So he ran to it and was ready to tag her. Remember, tag her. And she wasn't there either. ये देखो, अभी तक मिले नहीं है उनको. हाँ, कौन नहीं मिला है? जेम्स एंड सैली. स्टोरी, मेरे को एक बात बताओ साइबर, स्टोरी बोरिंग तो नहीं लग रही? आपको नींद आ रही है? नहीं मैम, नहीं. अच्छा, आई एम जस्ट किडिंग. आई नो, मीटिंग्स में ना मेरे को जब भी नींद आती है तो मैं पता है क्या करती हूँ? कैमरा ऑफ. I will take a big yawn, not a nap, big yawn, and then, अच्छा ठीक है, I'm back. Tell me, what do we have to do today? All right. So as he turned around, he saw James running towards base. Oh, looks like James is doing the same strategy. You know what strategy is? When we plan to do something in the upcoming days, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, उसका प्लान बना रहे हो, माइंड में सोच रहे हो कि मुझे उसको क्या करना है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका करियर प्लान है, चाहे आपका आज का डिनर क्या है, as simple as that, right? तो वो स्ट्रैटेजी बना लिया उसने. Okay, so as he turned around, he saw James running towards base and darted after him. तो वो भागा उसके पास swiftly. Just before he touched James' shoulder, James tagged the base and yelled out, "Safe!" तो James ने क्या कर दिया? That I reached the base before you and I'm safe now. पूछता है, "Did you get Sally yet?" James asked. "No," said Mark. "I haven't been able to find her and it's getting late and need to be heading home." Oh, इन्होंने Sally को ढूंढा नहीं है and they've already declared that it's quite late and they want to go back home without finding her. Let's see what happens. So both boys yelled out, "Come on out, Sally, it's late," but there was no reply. Not even a little snicker from somewhere in the darkness. तो मतलब छोटी सी भी आवाज या छोटा सा भी उसका व्यू नहीं उनको मिल पाया कि वो है कहाँ. They yelled again. दोबारा से उन्होंने चिल्लाया, "Come on out, Sally, it's late." Still there was no reply from Sally. They began to worry and started searching for her. As they walked around the area, they called out, "Sally, come on, we give up, you're safe." But no matter where they looked or how much they called out, Sally didn't answer. It was as if she disappeared. अब क्या हो रहा है? They means James and Mark. They both are looking for Sally. And you know what? They couldn't find Sally. Are you sad that they couldn't find Sally? Anybody sad? And she's not answering? I am sad. I know it's not a good news. Thumbs up is usually a good news, but I'm saying yes, I'm sad. Nobody has any feelings here? Nobody's feeling anything? Okay, dokie. तो फिर क्या हो रहा है पता है? सारी ने आंसर नहीं किया, उनको क्या लग रहा है? As if she has disappeared. यानी कि वो गुम हो गई है. You know disappeared क्या होता है? गायब हो जाना. ये देखो क्या हुआ है. पिक्चर से कुछ समझ आ रहा है किसी को? Yes ma'am. Good. Yes ma'am. है ना, ये तो पता चल रहा है क्या हो रहा है. ओहो, लेट्स सी, ये पेज तो पढ़ना ही पड़ेगा. आप सबके पास टाइम है ना? 9:30 तक है. सॉरी, मेरा 9:30 है, आपका 10 AM तक है सबके पास टाइम? Ma'am, we have 5 minutes more because Okay. 10 o'clock we have another session also. Sure. So let's do this. ये जल्दी से मैं ये वाला पेज करती हूँ, फिर हम रैप अप करेंगे और फिर आप मुझे बताओ कि हाँ कि क्या नेक्स्ट टाइम के लिए मैं क्या सबसे पहले प्लान करूँ. चलो. Sally was wondering what happened. All she could remember was crawling under the big trunk of a fallen tree to hide. Now, as she looked up, she saw several stars through a small hole above her head. She had fallen into a hole. And when she crawled under the tree trunk, "Help!" she yelled and heard her voice echo throughout what must have been a cave. "Help, help, help." जब आपको कुछ चाहिए होता है और आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है तो आप क्या बोलते हो? Help. Looks like she's in need now. You know what need is? She needs help. तो अब उसके साथ ये चल रहा है. तो चलो देखते हैं अपकमिंग स्टोरीज में क्या होता है. तो ये स्टोरी तो मैं कंटिन्यू रखूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए because I really want to see what happens and I promise I won't read before this class. We will all read it together. Okay, that's my promise. Second thing I will do is we will play a game called Hangman next time and I want each of you to participate. Okay,
What that means is you all need to answer questions. It shouldn't be me talking for an hour. If I talk for an hour, how would you learn English? You need to speak, you need to use English to communicate. So it is going to be both way communication. And hangman is a kind of game. We will do small words and we'll say spell it and tell us the meaning. So it starts with India में ना उसको कुछ और कहते हैं, मैं पता करके आऊंगी, मैंने खेली हुई है वो इंडिया में भी गेम, यहाँ पे हैंगमैन कहते हैं, आपको उस गेम का पक्का पता होगा. उसमें क्या होता है, अगर 5 वर्ड है राइट, तो लेट्स से 3 वर्ड देते हैं, लेट्स से कैट है, तो मैंने सी डाल दिया बट मैंने एट ही नहीं डाला, तो किसी और को फिगर आउट करना पड़ेगा नेक्स्ट अल्फाबेट्स कौन से होने वाले हैं, ताकि हम वो वर्ड बना सकें. वो जब हम वर्ड बनाएंगे देन वी विल टेल व्हाट दैट वर्ड मीन्स. इससे क्या होगा, हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी. दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी आर लर्निंग ईच डे. My focus is going to be at least 5 new words I want to teach you each day. ठीक है, और वो मैं मैसेज में भी डाल दूंगी ताकि सबके पेरेंट्स के पास होगा. प्रिंट आउट करना है जैसे करना है, और अगर कन्वीनियंट है मैं ईमेल करूं, आई कैन डू दैट टू, ताकि आप घर पे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हमें इंग्लिश की इंप्रूवमेंट करनी है, वोकैबुलरी बढ़ानी है, राइट. एंड देयर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टाइम, तो मैं यही फोकस करूंगी, बुक रीड खत्म करने का, 5 वर्ड्स खत्म करने का. एंड अगर हमें टाइम मिला तो एक दूसरे को हम सिखाते हैं कि पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज रिमेंबर, एक हम लोग अपने लिए गोल बनाते हैं. हाउ अबाउट दैट? अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैं क्विकली ये बात करना चाहती हूँ कि हम गोल बनाएंगे कि हमें रेज्यूमे कब तक तैयार करना है. अगर हम कहते हैं हमें 3 महीने में, क्योंकि 3 महीने में कितनी क्लासेस होंगी, एक मंथ में 4 क्लासेस है, तो 3 महीने में कितनी हुई गाइस? जल्दी. 12. Good job. So 12 क्लासेस में आप सबका रेज्यूमे तैयार होना चाहिए. ठीक है, हम ये गोल बना के चलते हैं, और वैसे ही हम इंग्लिश भी सीखेंगे और ये भी करेंगे. बट आज मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को मिलकर, आप लोगों को जानकर. देयर आर सो मेनी कॉमन थिंग्स बिटवीन अस. मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे कंप्यूटर पे काम करना पसंद है, मुझे क्रिकेट, मुझे देखना इतना पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को ज्यादा पसंद है. I'll be honest there. But no, it was wonderful having a chat with you. Next time, I want you to talk more than I do. Okay? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Get yourself a break. Bye. Bye. Ma'am, I sent it you a link on your WhatsApp. Please fill Okay. that form also. Sure, I'll do that. Cool. Thank you. Bye. Okay, thank you so much, ma'am. Bye. Okay, आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन मैम के साथ? बहुत अच्छा लगा. Yes, अच्छा था मैम. Yes मैम. आशीष अनम्यूट करिए. अच्छा लगा, वेरी गुड. आप ऐसे ही ना अनम्यूट करके मैम से भी बात कर सकते हैं. ठीक है, ये नहीं है कि हमने क्या गलत बोला, हमने क्या सही बोला, हमने बोला ये मैटर करता है. ठीक है, आप कम से कम जो वर्ड्स हैं आपके अंदर, जो भी चीजें हैं, आप उसको बोलने की कोशिश करें. ठीक है आशीष, धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे आप आशा दी के साथ कंफर्टेबल है, मैम के साथ भी आप ऐसे ही कंफर्टेबल हो जाएंगे. ठीक है, चलिए सेशन हम इसको ओवर करते हैं. आप अपना नेक्स्ट मेरा आपके साथ ही है, तो 11 o'clock अराउंड आप रेडी रहिएगा. ठीक है, मैं लिंक दूंगी, आप उससे ज्वाइन करें. चलिए, बाय एवरीवन. Okay. ओके, बाय एवरीवन.